جناب آج ہمارا سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں دوسرا دن ہے اور آج میں اپنا پیپر پریزنٹ کرنے والا ہوں جو کہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی کانفرنس کا حصہ ہوگا۔ اور اس وقت آپ لوگ مجھے ایس ایم آئی یونیورسٹی کے خوبصورت ہیریٹیج بلڈنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کانفرنس کی جو اوپننگ سیریمنی تھی اور اس کے حوالے سے جو انٹروڈکشن تھا وہ ہمارے پریویس ایپیسوڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے تو وہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیں کیونکہ یہ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب گلوبل ریسرچ کانفرنس جو ہے جو ایس ایم آئی یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، اس میں 6 کانفرنسز ہیں اور میں جس کانفرنس کا حصہ ہوں وہ ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ۔ تو اس وقت میں اپنی کانفرنس کے جو ہے بینر کے آگے کھڑا ہوں۔ گلوبل ریسرچ کانگریس جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں اس وقت ہو رہی ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے اور اس کانگریس کے اندر رہتے ہوئے 6 کانفرنسز مزید ہو رہی ہیں، جن میں سے ایک کانفرنس کا میں خود حصہ ہوں۔ میں اپنے کانفرنس پریزنٹیشن ہال میں موجود ہوں اور دل زور سے دھڑک رہا ہے کیونکہ میری باری آنے والی ہے اپنی ریسرچ پریزنٹیشن کے حوالے سے۔ میری ریسرچ ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جس میں سوشل میڈیا پہ بار بار مختلف قسم کی چیزوں کا ریپیٹیشن شامل ہے جو کہ ہمارے ذہنی خیالات پر جو ہے مزید قابض ہوتے ہیں اور ہمارے خیالات میں تبدیلی لاتے ہیں۔ یعنی کہ تبدیلی جو ہمارے خیالات میں آتی ہے نیچرل نہیں ہو رہی، بلکہ سوشل میڈیا پہ کچھ خاص قسم کا جو کانٹینٹ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ میری ایک ریسرچ ہے جو میں آج پریزنٹ کروں گا اور اس وقت دوسرے ریسرچ پیپرز بھی پریزنٹ کیے جا رہے ہیں اور اب میری باری آتی ہے۔ Cognitive distortion through algorithmic consumption, a model for understanding how AI shapes human reasoning and patterns. This is being presented by Dr. Kaplan Jadhav. Please. Algorithm influence thinking. Simple. That's the main research. How algorithm influence thinking. It's a half-filled glass or half-empty glass. How many think that it's a half-filled glass? How many? Please raise your hands. Okay, and how many think it's a half-empty glass? Okay. I am targeting that whatever you are thinking that is half-empty glass. Now I am start showing the videos, the contents, that how much it's you can say that it's irresponsible fact about the half-empty glass for the human. The human needs more water. I connect with this the scarcity of water. I connect with the health issues and creating that half-empty glass is injurious to health or half-empty glass is not enough for any human life. So you start thinking, and the first thing comes that you every human find out the positivity in their thinking, and you start saying yes, it's half-filled glass. Means that you need to reduce the negativity of your. That's not the actual perception you develop after videos, after exposing with the social media content. You change your mind. Same recently we faced in different matters in the over the different issues. One comment, one individual comment gave us the comment. If it keeps showing up, it must be important or true. If it keeps showing again and again, it must be important and true. You know the basic definition of propaganda. The word propaganda is like a subject in the armed forces. And what is propaganda? In 3 lines. One thing, a fake information. Second, the repetition of fake information. And third, the development that the fake information is true by the receivers. Yes, next. Clear 3-stage process during the that's the confirmation of the cognitive distortion. Algorithmic exposure means the customized exposure to the customized content, and the cognitive distortion, and the real world outcomes, whatever we are facing. It's customized now. Yes, sir. میرے پینل کے ہیڈ ڈاکٹر ٹونیو نے میری ریسرچ پر جو ہے کچھ ریکمنڈیشن دی ہیں، لیکن انہوں نے میری ریسرچ کو پسند بھی کیا ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے
जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। और फिर मुझे यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिला एज अ डॉक्टर कामरान जावेद, जो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा आप कहने के लिए यादगार लम्हा है। जनाब अब हम कुछ और भी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर और कौन कौन सी रिसर्चेस प्रेजेंट की जा रही हैं, उनको भी देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस में, मगर कहाँ, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। तो वो आपने ये कॉलेजेस टीचर्स की बात की तो उसमें तो मुझे बहुत, और हम ये शहर में बैठ के बात करें, आपने कराची हैदराबाद के इसमें इस्तेमाल किया। Today I feel so much honor कि मैं SMI यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ एज ए डॉक्टर कामरान जावेद। ये मेरी पहली रिसर्च है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ माय PhD। और अब तकरीब जो है, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस की जो तकरीब है, अब इसका इख्तिताम हुआ जाता है। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ग्रैंड लंच होगा, जहाँ पर नेटवर्किंग होगी मुख्तलिफ किस्म के PhD स्कॉलर्स के साथ, और हम अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे और नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर के बारे में डिस्कस भी करेंगे और इसका हिस्सा बनने की भी कोशिश करेंगे। तो एक यादगार लम्हा जो हमने आज SMI यूनिवर्सिटी में गुजारा फॉर अटेंडिंग द ग्लोबल रिसर्च कॉन्फ्रेंस। मैं हाईली ऑब्लाइज्ड हूँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ SMI यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस अजीमुल शान कांग्रेस में, इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकूं। नेटवर्किंग लंच पे हमारी मुलाकात मुख्तलिफ PhD स्कॉलर से हुई, जिनका ताल्लुक कनाडा से था, USA से था। और आज की एक कॉन्फ्रेंस अपने अख्तिताम को पहुंची और मैं अब यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ चल रहा हूं। लेकिन जाते जाते SMI यूनिवर्सिटी के दर दीवार मुझे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि एक नहायत ही खूबसूरत लम्हा अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन का मैंने इस तारीखी इमारत में गुजारा। और SMI की ये यूनिवर्सिटी की जो दर दीवार हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारत हैं, इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म और सर सैयद अहमद ख़ान जैसे रहनुमाओं ने अपनी तालीम और तरबियत हासिल की और हमारे लिए पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क बनाया। और आज इसी इमारत के तले, इसी दर दीवार में, उसी छत के नीचे मैं मौजूद हूँ अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए। SMI यूनिवर्सिटी की जानिब से हमें सोवेनियर भी मिला, क्योंकि गो ग्रीन पॉलिसी है तो हमें टोट बैग मिला और इसका थीम था भुल्लन को बचाओ, यानी कि डॉल्फिन को। और डायरी, बॉल पेन वगैरह ये सारे सोवेनियर्स हमें मिले ताकि हम इन सोवेनियर्स को आगे इस्तेमाल में भी लाएं और अपनी यादों को भी ताज़ा करें जो हमने SMI यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस पे गुजारे। WWF और गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी इनके साथ इल्हाक में मौजूद थे और कोलैबोरेशन में थे। और एक बड़ी यादगार शाम हमारी यहाँ पर PhD स्कॉलर्स के साथ गुजरी। सिंध मदरसतुल इस्लाम एक ऐसा नाम जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मायनात यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों में से एक है, और आज मैं इस तालीमी इदारे का हिस्सा बना हूँ। इसी तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए
Don't forget to subscribe and follow BAM TV. It's not less than a proud moment for me at Sindh Madrasatul Islam University. You are watching BAM TV.